different projects, like one of them is EDLS, and I'm a teacher trainer there, and I'm a curriculum developer with them, and the project is about with the underprivileged students. And other than that, there are other projects, but the one thing that I would like to highlight here is I'm a homeschool mother of three homeschoolers. That is what the basic thing. Okay, so I gave a little bit of introduction. You guys know that I'm affiliated with education, the fields of education. I have two girls, दो बेटियां मेरी, ages 8 and 11. Journey, I guess I've been on the homeschooling path for about 10 years actively. और बाकी, what else do I want to say? I've worked with ERDC as well. I know a lot of people here are affiliated with ERDC. I had the honor of, doing the course, alhamdulillah, learning from mentors. Saima actually still is one of my mentors. It got me बैठी हुई है mentor, so that's why I'm so nervous. And I had the pleasure to also be a co-mentor for 2 batches, so that was a really turning point in my life, I think. Baki, I think this is my first public event, I would say. बहुत अरसे के बाद ये महसूस हुआ कि I have to share what I know now, because इसी तरह मैंने भी सीखा from people who had been on this journey before. मैं उनसे पूछ के उनके पीछे पढ़ के, that's how I learned as well. So now I thought it was high time, that I felt a little more, I guess, just willing to share my experiences and hoping that it would benefit other people as well. You're missing a mic. I would like to first start by asking Fatima, how is homeschooling different than unschooling? This is a question that I'm personally interested in as well, because when I was exposed to this homeschooling community, I started learning about homeschooling, but then came this new concept, unschooling, कि बच्चे को कुछ पढ़ाना ही नहीं है. ऐसे कैसे possible है कि बच्चे को कुछ पढ़ा ही नहीं और खुद ब खुद बच्चा पढ़ ले? तो yeah, please reflect on that. So basically, I started off as a homeschooler. ठीक है, जब हम homeschooling की बात करते हैं, we still associated with a structure, right? एक structure है. The way I started was APS का curriculum मैंने लिया था. पिंडी में मैं थी, मेरी बेटी was in prep class, और उसको मैं बिल्कुल as it is follow करती थी, right? Because I couldn't do it. I'm a mom. I'm not a teacher. I'm not qualified, right? These were the thoughts that were going on in my mind. Our school भी नहीं भेजना, right? I heard of this thing. I want to try it. I asked my husband, मुझे 1 साल दे दें. Let me just try it, right? And I was the first person in my family to do it, so no guidance as such in the family. Honestly speaking, 10 years ago, social media and internet पे भी इतनी ज़्यादा resources नहीं थी जो अब है, right? So that's how I started. Eventually, once you just एक project हम शुरू किया, उससे एक idea से बहुत सी avenues खुली, right? Same thing with this. Once you try something and you're willing to learn, you're willing to connect with people, Allah will connect you with resources. And that has always been one of my du'as, right? Especially after moving to Pakistan and choosing to stay here, alhamdulillah. I've always made a dua to Allah, Allah, please give me access to the best of resources that are good for my family, and also give me the himmat and tawfiq to actually use those resources. Right? वो एक अलग दुआ है, because इतने ज़्यादा होते हैं, but we don't use them. So basically, there's no one answer, right? It's just a collection of so many different experiences that led me here. Also important to see what your kids are, what works best for your kids as well, and finding out what works for them is very important. Yes, exactly. So the main difference I would say is homeschooling में थोड़ी routines थोड़ी ज़्यादा strict होती हैं. You stick to a schedule, right? Unschooling में we're at that point where we know what we're doing, and even if we don't, we're gonna fake it, right? थोड़ा overconfident हो जाता है इंसान. But right now, sometimes it's a mixed cross. It's a mix of structure and unschooling. Again, like I said, our family, we travel a lot as well because of my husband's work, right? So हमें बनना ही है unschoolers. We can't stick to one routine.
And then forcing myself to stick to one routine as homeschoolers causes me and my family stress. That's basically it, right? There's no one answer. It's a continuation of continuing conversation. मैंने इसी question को tackle करने के लिए अपना फिर page Instagram पे खोल दिया, because I get these questions and I'm not able to answer them. There's not a black and white answer, right? I've had people come and spend a few days with me. Right? And to keep it really short, we just live life. Like my kids and I were just living life, right? कोई separate life नहीं है. मैं कभी उनकी पसंद की चीजें कर रही होती हूँ, कभी वो मेरी पसंद की कर रहे होते हैं. It's a constant collaboration, communication. No, please images of my sense hटा देंगे. Oh, what a nice happy family. Right? लड़ाई झगड़े भी होते हैं, right? Everything is, it's a beautiful chaos now. I've learned to accept the chaos. Assalamu alaikum. I'm Humaira Salman. I am the director of Learners Resource Galaxy, and inshallah ta'ala we'll talk about it later. But I'm very happy to see people are ready to think beyond the norms. Wish you all the best. My elder one has attended school till grade 4. Thanks to COVID, since like 2.5 years I'm homeschooling them. Now the problem which I faced, obviously I myself also have gone to school, so obviously वो हम उसी से compare करते हैं. अभी currently what I've learned right now, अभी मुझे पता चला कि ये मैं शायद first phase से गुजर रही थी कि अभी सारा curriculum ही चल रहा है मेरे घर में. फिर वो वही जैसे आपने APS का उठाया था तो मैंने Head Start का उठाया because it was going to Head Start. वही same चीजें चल रही है. लेकिन मसला ये जो मैं face कर रही हूँ मेरा बड़ा वाला है. He is used to taking instructions. जब तक मैं उसे बोलूँगी नहीं कि ये करना है, वो नहीं करेगा. Open page based, no question list, only तो उसकी limited सोच. Second one, he just spent for 6 months. वो बिल्कुल prep में था, हो गया. बिल्कुल उसने मतलब सारा टाइम मेरे साथ ही गुजारा. तो उसकी दिमाग में फिर चलता है. Very curious boy, question ही. अब तो comparison दोनों में है. तो बड़ा वाला सीख ही रहा because अभी भी maybe I'm expecting it too early. लेकिन हम जो पेरेंट्स भी are facing the situation कि अपनी वो जो है ये तो आप asking question. अब प्लस वो इंट्रोवर्ट भी है थोड़ा सा, वो अपने तक है थोड़ा गूगल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो ये चीज़ को हम सेल्फ प्रिपेयरिंग या सेल्फ जो आप बात कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दें. How can you start? What is going to be your first step? Sorry, I just want to add one thing. ये जो transition period होता है ना, my best advice is कि जब आप स्कूल से homeschooling में transition करें, you need to have a deschooling period. ठीक है? You need to not do anything. Relax. Live life. जैसे हम summer vacations में किताबें खोल देते हैं और फिर 3 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ा जाता. Do that. Okay? And consider it learning. अपना perspective change करें. किताबों से learning नहीं होती. That is not it is just a tool. That's it. Right? So you need that period. फौरन से आपको एक जेल से दूसरे जेल में डाल देंगे. Right? So that's why it's backfiring. Let them explore. Let them be wild children. Right? And you see the magic in shit. I want to add to this apart from sorry, I want to add something here. जो आपने core curriculum book की बात की. ये जब मैं when I was teaching here at IBA, so I gave them a list of things or resources that you should be checking with my model handbook, which was not the case at that time. I was very surprised to that as well. तो बच्चों का सवाल, students का सवाल ये होता था, मगर मिस course book क्या है? I would say to them कि go in the library and explore. I don't know what would suit you best. या किस author की बात आपको समझ आएगी और किस टॉपिक में किस ऑथर ने क्या बात लिखी हुई है. But that course book was so essential because that's what we have been feeding them since they were little. कि ये आपकी कोर्स बुक है, ये खत्म करनी है और उसके बाद आपको एग्जाम देना है. So that I think needs to be now and also when I was giving the presentation as well, when I would always give the presentation, class खत्म होने के बाद मिस slides मिल जाएंगी. These are my slides. I hope none of you will ask me that. So those 2 questions were they would be ongoing in every class, and it's just talking about the mindset, of the children that we, that grow up to university. तो अरमान साहब अभी कह रही हैं कि afraid to try something new.
afraid to read a new book, afraid to reflect and ponder on their thinking and saying, okay, can I question this? One of the things that I learned of my training in the UK was that nothing is a wrong question and no answer is wrong as well. And आप हमारे यहाँ पर देख लीजिए जब हम कोई सवाल करते हैं सबसे पहले अब फिर सवाल कर दिया हमारी क्लास का टाइम आगे हो गया. So even that questioning is not allowed in the classes. So all those things needs to, like we said, needs to we need to reflect as well. And also I think मैंने किसी से बात की थी when we were trying to plan Sidr Club. One of my sister's friend, she has her own nursery. So I said, what kind of strategies do you follow? So she said to me something very interesting that I think we all mothers should listen. She said, well, we were going with the exploratory play-based approach. मतलब पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आया कि आपने तो उसको अभी तक पढ़ाना शुरू ही नहीं किया. फिर हमने उनको करिकुलम पढ़ाना शुरू कर दिया. तो हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी इतना प्रेशर आता है ऑन टीचर्स, ऑन द स्कूल्स कि आप उसको पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, क्यों उसको अभी तक ABC नहीं आ रहा, उसको 1 2 3 नहीं आ रहा. I never taught my child to write anything, for example. He started learning on his own. He started making spellings on his own. And it's okay for your child to take their time and explore on their own. But you need to give that time as well. I would like to pass on to आप में से कोई होम स्कूलर है, किसी ने कभी होम स्कूल किया है? खुद होम स्कूलर है या बच्चे को होम स्कूल भेजा था या डायरेक्ट होम स्कूलिंग? उसके बाद कितना अरसा लगा बच्चे को अपना सवाल पूछने में? When the child was interested to ask a question that was in his heart and in his mind. लगा ये जो अभी बात हुई ना डी स्कूल की, इतना टाइम और इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है. I have got 3 children. I pulled them out of, I am, अल्लाह दौरे जहलियत के गुनाह माफ करने वाला. I started my career as a traditional school teacher long time back. मगर उस वक्त थॉट प्रोसेस अपना काम नहीं करता था, क्योंकि हम सबको जो फेयर होता है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला का फेयर होता है. अगर फेल हो गए तो बचपन में पिटे हैं, मेरा ख्याल हम सब पिटे हैं कभी ना कभी, कम नंबर आने पे, कम ग्रेड्स आने पे. उस फेयर ने आज तक हमें होल्ड बैक किया हुआ है और हम इस बात के लिए तैयार ही नहीं हैं कि मेरे बच्चे के कम नंबर आ सकते हैं या खुदा ना खास्ता वो फेल हो सकता है. There's a syndrome. Have you ever seen a dream where you're giving an exam? This is actually a syndrome. That when exams होते हैं ना, उन्होंने भी इतना make कर दिया कि we actually fear of giving exam even when we are not giving exam actually. जब मैंने 3 बच्चों का न्यूट्रिशन पढ़ी है, वो बेटे को किया, उस वक्त वो क्लास 5 में थे, अब वो पास्ट यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, और छोटी वाली बेटी क्लास 2 में थी एंड शी इज अ ट्रू होम स्कूलर विद ऑल हर पेरेंट्स. वो अब तक माशाल्लाह से अपने कोई 3-4 बिजनेस सेट कर चुकी हैं और वो सीजन वाइज बिजनेस करती हैं. गर्मियों में वो बेकिंग करती है, सर्दियों में वो निटिंग करती है. मतलब she starts whatever she feels that is best for her in that particular time. she's not afraid of losing it. And she's not afraid of losing. उसको हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी पूरी तुम जो फेसबुक पर पूरा अपना प्रोफाइल बना रही हो वो सब चला जाएगा, तुम्हारे क्लाइंट चले जाएंगे, तो किसी को और आ जाएंगे. उसको कोई खौफ नहीं है. लेकिन इसको अचीव करने के लिए अम्मा अब्बा को बहुत पेशेंस की जरूरत है. बारबेक्यू ऑन अ स्लो फ्लेम और अल्लाह पे तवक्कल. आप यकीन कीजिए, आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में भेज दें, आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूशंस लगा दें, अल्लाह पे तवक्कल. जब आपको होम स्कूलिंग आप करते हैं ना, तो अंदर से आप भी उतने डरे हुए होते हैं जितना खौफजदा को दादियाँ नानियाँ पुप्पियाँ चचियाँ करती है ना, रह जाएगा, क्या कर रही हो, तबाह कर दिया. लोगों ने कहा बच्चों का बचपन छीन लिया. ठीक है, ये सारी बातें होंगी, बट यू नीड टू होल्ड ऑन.
हाँ जी, बट आपने पूछा कि स्कूल भेजने का पर्पस क्या है? आप स्कूल की बात कर रही हो, मुझसे लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी भेज रही हो. Yeah, this reminds me also of the whole concept of hifz कराना अपने बच्चों को. It's usually because मुझे वो stamp चाहिए, right? Yeah, हाँ, मैंने जन्नत में जाना है, खुद नहीं करना, ये ले जाएगा ना मुझे, right? So it's, you know, unlearning at every level. ठीक है, every level, right? किसी न किसी को, किसी generation को ये करना है. It's painful. Allah has chosen us here to carry that pain because we can do it, right? I am a college dropout, right? I went to Rider University in New Jersey in America. I dropped out by choice because मुझे ज़िंदगी बिल्कुल बेमकसद लग रही थी उस वक्त. You know, of course, you know, you're going through an identity crisis, right? And that is one of the best things that happened to me. And now I am training PhD holders on basic things like. I'll take it too. 2020 में जब कोविड आया और जिंदगी को पॉज लगा, उस वक्त गूगल ने अनाउंस किया कि 5 कोर्सेज का एक पैक अनाउंस किया था गूगल ने, और उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट लुकिंग एट योर सीवीज एट ऑल, आप ये 5 कोर्सेज कर लीजिए. काफी लंबे लंबे प्रोग्राम्स थे, उनका सर्टेन टाइम लिमिट था जिसके अंदर वो प्रोग्राम्स कंप्लीट करने थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप अगर अब आपको हम साइट्स और कंट्रीज भेजेंगे जहां इसके ऊपर आपको जॉब मिल सकती है. माय सन स्टार्टेड इट, ही कंप्लीटेड इट, और उसके बाद सबको वो जॉब्स के ऑफर्स आने शुरू हो गए कि इतने की मिल जाएगी, इतने की मिल जाएगी, और हम हंसी मजाक करके वो बात खत्म हो गई. इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग अ स्किल, इट वाज नॉट अबाउट अर्निंग फ्रॉम द स्किल. दूसरी बात जिन लोगों ने कहा ना 7 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, भाई जिसके इतने छोटे बच्चे हैं अभी से अपने बच्चों को जो गैजेट्स और टूल्स है ना उनका सही मकसद सिखाते हैं. सबसे मजेदार काम ये है कि आप अपने गैजेट में जो आप अगर मोबाइल देते हैं या कंप्यूटर है या टैब है व्हाटएवर इट इज, उसमें टास्क की लिस्ट पहले अपने लिए बनाएं, ऑलमोस्ट 30 टास्क जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करें, और हर हफ्ते आप उससे ये कहें कि आई एम गोइंग टू सेंड यू अ मेल ऑफ दीस टास्क, you select your favorite tasks from here and you can do them, और उससे उनके पोर्टफोलियोज बनवाएं. ये जो टाइम आ रहा है ना जब हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएंगी यार बहुत जल्द, तो उसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियोज काम आएंगे और आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने कहीं वॉलंटियर किया, आपने कहीं जाके इंटर्नशिप की, वो काम आएगी. तो अपने बच्चों के पोर्टफोलियोज बिल्डअप करने पे एफर्ट लगाएं. कहानी सुनते हैं बच्चे, उन कहानियों का उनसे कहें कि भाई फेवरेट कैरेक्टर ड्रॉ करो, इस कैरेक्टर के वर्ड्स, बच्चा बहुत छोटा है उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप नहीं है, उससे कहें इसके वर्ड्स लिखो, आपको इस पूरी स्टोरी में कौन से 3 वर्ड्स अच्छे लगे. उसके बाद उन वर्ड्स को यूज करना